बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अजमत इकबाल तारक, सीनियर इंस्ट्रक्टर, पाकिस्तान नेटवर्क टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। आप लोगों के कहने पे और इंसिस्ट पे आज हमारा टॉपिक होगा हाउ टू गिव द इंटरव्यू और हाउ टू टेक द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के टिप्स। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है कि बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम, जो आपको गिवन टाइम दिया गया है यू शुड बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। और उसमें जो है आपको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स अर्ली पहुंचना है जहाँ पे आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, जो भी आपकी फिक्स प्लेस है। सेकंड होगा वेल ड्रेस। योर ड्रेस शुड बी एज पर फैशन। वेल ड्रेस ये नहीं है कि शलवार कमीज पहन के चप्पलें पहन के आप चले जाओ। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। थर्ड नंबर पे है शेक हैंड इफ एम्प्लॉयर वांट्स। सबसे पहले जाके आपने जो हमारा तरीका है अस्सलाम वालेकुम, शेक हैंड, एंड देन ही विल आस्क यू टू बी सीटेड देयर, या यू कैन आस्क हिम कैन आई हैव अ चेयर। आप वो अलाउ करेंगे, आप उनके सामने बैठ जाइए। देन फोर्थ पे है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो आपसे क्वेश्चन करें, आपसे पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Then you have to give your complete biodata about your family background, your education, your experience, your strengths and weaknesses. ठीक है? Then next are cross questions during an interview. Yeah, at the end of interview, you have the right to ask them some questions that you can ask. What is the products you are making, you are manufacturing? You can ask the question about the product of that company, about the turnover of that company, turnover per month that company, and the total exports of that company. Others, what are the benefits they are offering, what are their company's policies, and vice versa. Then 6 number पे है don't be nervous, बी कॉन्फिडेंट। आपने नर्वस नहीं होना। यू शुड शो योर सेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंट, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। इफ यू विल रिप्लाई कॉन्फिडेंटली, द एम्प्लॉयर विल ऑब्जर्व योर फेस रीडिंग, एंड एट द एंड इट विल क्रिएट या इट विल लीव अ पॉजिटिव इम्प्रेशंस या पॉजिटिव रिमार्क्स in your interview. Then next होगा presentable CV along with copies of certificates. You should have your CV up to date in color copies attached with copies of certificates. That should be a presentable. Next होगा talk in respectful manners. Your body language should be respectful, which shows that you belong to a good family, you belong to an educated family. You show yourself as an educated person, and this will create a positive results. They will give you the positive results. Then next होगा don't lie. आप जो भी अपना CV में लिखो, जो भी CV में mention हो, that should be true. ये नहीं हो कि आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है और CV पे लिखा हो 10 साल का। समटाइम इट हैपन्स लाइक दैट। उसमें यह है कि अगर वो आपकी कंपनी से या जो भी आप प्लेस बताते हो कि वहाँ पे मैंने इतने साल काम किया है, माइट बी कोई वहाँ का बंदा कंपनी के उस बंदे को कोई जानता हो या कोई उसका रिलेशंस हो, देन ही कैन आस्क हिम कि ये लड़का मेरे पास आया है, तो इसने कितने साल आपका काम किया आपके साथ। ही विल टेल हिम ट्रूथ। और आपने अगर 10 साल बताया, वो तो बताएगा कि 1 साल किया है, then it will create negative impact. Next है talk to the point. Always talk to the point. जो आपका टॉपिक है, जो जिस मकसद के लिए, जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं, always talk about that positions. Don't beat about the bushes. इधर उधर की बातें नहीं करना, सिर्फ आपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है। यू शुड फोकस ऑन योर इंटरव्यू, यू शुड फोकस ऑन द पॉइंट, the products which that company is producing.
मीन्स अगर मेडिकल कंपनी में जा रहे हो यू शुड टॉक अबाउट द मेडिकल फील्ड, और अगर आप गारमेंट्स की कंपनी में जा रहे हो देन यू शुड टॉक अबाउट द गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेट प्रोसेस, एक्सपोर्ट्स, लाइक दैट। तो 10th पॉइंट ये है, देन इंटरव्यूअर विल आस्क यू या एम्प्लॉयर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस during your interview or at the end of your interview. It depends on him. First question is he will ask you introduce yourself. When you sit over there, his first question will be tell me about yourself or introduce yourself. So then you should tell him about your personality, whatever we have discussed earlier. This all you have to tell him in detail. Then next hoga, what are your strengths and weaknesses? He will ask you, what are your strengths and weaknesses? Then you tell him, what are your strengths? Means I am punctual, I am quick learner, I am troubleshooter, I am smart in work, I have the positive attitude, I have the positive approach towards the work, I have the aggressive personality, like that this kind of strengths you have. Weaknesses, sometimes you get angry early, you confuse, you cannot take the more pressure or more burdens of work. You can work at one time one task, you are not multitasker. So this type of things are in your weaknesses. Next question होगा, why should we hire you? He can ask you, why should we hire you? Why do you need us? आपके में क्या ज़रूरत है? Then you tell him that if you hire me, if you give me this opportunity, I could have a great platform as your company, your organization is well reputed. I have a good platform to perform and to perform using my abilities and capabilities and the experience, which will have the positive impacts, positive results in your company. I will work for the growth of company and can create the maximum profit, can gain the maximum profit for your company. And whatever you can do for that company, you have to tell them. You can ask him, if you hire me, you will have the very positive results from me on your investment. By using my expertise, I will put my all-out efforts to give you the maximum results, and I will work for your entire satisfaction, which will increase, which will improve your business volume, your business growth, and ultimately it have the very good addition. My appointment would have been the very good additions in your staff, in your team, if you hire me and if you give me the chance and if you give me the opportunity. I can prove myself as the asset for your company, which can add my capabilities, my growth, which can add my experience in your company, my abilities, my expertise in your company to get the maximum profits. That's all. होप के आप लोग सब इस पर प्रैक्टिस करेंगे और ये आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इट विल बेनिफिट फॉर यू। और फर्दर जो है ना मज़ीद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए और वीडियोज़ अपलोड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, ताकि जो है ना इस चैनल की और इस इंस्टीट्यूशन की प्रमोशन पे काम हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।